So understand this. जैसे कि ये आ रहा है first one, the FD is required by the Companies Act to prepare financial statements. ना FD नहीं, the complete organization as a whole. फिर the management accounting section is primarily involved. ये तो complete false है. If a firm of accountants may be hired to help with accounts preparation, at the end of the year, they are not responsible. The management is only responsible. ये principal agent relationship हो गया फिर से. Okay. Now, what do you mean by principal agent relationship? Until unless you are 18, whatever acts you do, your parents are responsible. You are not responsible. In the same manner, जिम्मेदारी किसकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके रेडी रखने की? मैनेजमेंट की. Management is responsible to prepare financial statements according to the financial standards, accounting standards. Now, वो किसी और से कराओ या खुद करो या किसी को हायर करो, it's up to you. But responsible कौन है? It's you only, not the outside people. Now, consequences of compliance failure. What do you mean by compliance and compliance failure? Compliance failure. खाली टर्म compliance आप लोग गूगल कर सकते हैं. ये सब टर्मिनोलॉजीज आप लोग को इजीली समझ में आना. कल के दिन ऐसा नहीं होना कि कोई टर्मिनोलॉजी की वजह से आप ट्रिक हो गए. हाँ, द एक्ट ऑफ ओबेइंग अ लॉ. और कंप्लायंस फेलियर अगर हुआ तो लॉ के खिलाफ, उसूलों के खिलाफ चले गए तो, उसूल नहीं, रूल्स रेगुलेशंस. तो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना इज कॉल्ड कंप्लायंस. कंप्लायंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस इज फॉलोइंग अप द रूल्स रेगुलेशन इन हियर. तो यहाँ पर कंप्लायंस के साथ रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बोलते हैं कि कंप्लायंस का मतलब ही होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना. आर यू कंप्लायंट और नॉट? अगर आप कंप्लायंस के साथ पूरे काम कर रहे हैं तो यू आर डूइंग रियली गुड, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. लेकिन अगर आप कंप्लायंस नहीं हो रहा है आपका बराबर, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स ही होंगे. You guys are getting it? So let's just move forward. Failure to keep proper accounting records or to prepare regulatory financial statements that give a true and fair view are both criminal offenses. In both cases, responsibility is that the directors who can be fined failure to comply. Should the company be listed, it may have its shares suspended by the stock exchange, meaning that they cannot be traded. There may be further problems with tax authorities, penalties, and all those stuff will be given अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करे तो. ओके. आइडेंटिफाई हाउ फेलियर टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कुड लीड टू कॉर्पोरेट फेलियर. अब जैसे कि देख लो बायजूस के साथ क्या हुआ. दे आर नॉट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल डेटा ऑन टाइम बोलकर डेलॉइट छोड़ दिया उसको. बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा धक्का है वो बायजूस को. लेकिन वो लोग कर रहे भी गलत, वो बात अलग है. बट फेलियर टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आपको मालूम नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रही है, आगे बढ़ रही है या नीचे जा रही है, आपको कहाँ टाइम देना है यहाँ पे या नहीं देना है. यू हैव टू थिंक अबाउट इट अ लॉट. ओके. देन इंटरनेशनल रेगुलेशन ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन. नाउ कैन समवन जस्ट रीड दिस फॉर मी. अंसार थोड़ा जोर से पढ़ो.
एकदम काफी उसका सामने रखते काफी As mentioned above, companies need to follow the requirements of the Companies Act or equivalent and the tax authorities of the country in which they operate. However, the accountancy profession is keen to be self-regulating, meaning that the profession would prefer to issue its own regulations and deal with problems itself rather than relying on legislation. This has led to companies not only having to follow the requirements of their country's company legislation, but also of various standard setting bodies which were linked to their country's accountancy profession. By the 1970s, this meant that there were a wide range of different accounting standards being applied in different countries across the world. It became increasingly difficult for international investors to compare the financial statements of companies in different countries. Now, if you just see here, हर कोई अपने अपने तरीके से अकाउंट्स चला रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कंपैरिजन करने मुश्किल हो रहा है. अब फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं तो एक कंट्री के दूसरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अनदर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. सो यू विल नॉट बी एबल टू कंपेयर दीस टू प्रॉपर्ली. I mean, you are not able to compare these two properly, you will not be able to make a decision properly. और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, इसीलिए आए हैं प्रॉपर स्टैंडर्ड व्हिच इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स which has to be followed regardless of the rules regulations coming up forward. लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनके पास प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, उनकी कंट्री के पास प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस है नहीं, इसलिए वो लोग ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं. अब जैसे कि इंडिया में प्रॉपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, उसको हार्मोनाइज कर रहे हैं आईएफआरएस के साथ. हार्मोनाइज कर रहे हैं मतलब थोड़ा उसको मैच कर आईएफआरएस के हिसाब से ही चलाने वाले हैं, ठीक है. क्यों? ताकि इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी आए. अब जैसे कि एसीसीएस के पास बहुत ज्यादा ये as an argument रहता है कि if IFRS is going to be implemented more in India, then ACCAs are going to have more value. As simple as that, because you people learn IFRS. अब chartered accountants are also learning IFRS. जब हम पढ़ रहे थे तो IFRS का नाम निशान नहीं था, ऐसा सोचते थे कि IFRS है, but now it is also being implemented at organizations. Why? Because it's easy to do it and easy to compare it on global basis. Okay. Now to deal with this problem, the International Financial Reporting Foundation was formed to try and harmonize. Try and harmonize मतलब make more similar. मैं अभी आप लोग को harmonize बोल रहा हूँ, आप लोग को याद रहेगा कल harmonize का मतलब क्या है? Yes, 100% बोल रहा हूँ, मुझे नहीं. लिख लो, लिख लो, लिख लो. आप लोग के नोट्स में आप जितना लिखेंगे, your nervous system will wire it that and you will remember it. क्यों बना रहे हैं हम ये स्टैंडर्ड्स प्रॉपर? आईएफआरएस क्यों फॉलो करेंगे हम लोग? So we can get international acceptance. इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस अंडरस्टैंडेबल कि इंटरनेशनल, और आप इंटरनेशनल जा सकते हैं आसानी से, कंपैरिजन अच्छा हो सकता है. जैसे कि देखो जूलिया के पास पैसे थे, तो कंपनीज में से कोई कई जगह इन्वेस्ट करना था. ABC Limited is a travel company based in the UK. XYZ Limited is an aluminium company based in Jamaica. List 5 problems Julia faces in comparing the finance statements in these two companies. जमीन आसमान की प्रॉब्लम आया है. जमैका अलग हो गया, यूके अलग हो गया, डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है. वो लोग IFRS यूज करते, ये लोग IFRS नहीं यूज करते. They will not have proper records to be maintained. Some will have, some will won't. So there is all those stuff in there. Now moving forward, I want you guys to write it down. The role of IFRS Foundation का क्या है? Is a supervisory body for IASB and is responsible for governance issues and ensuring each member body is properly funded,
अब इनका काम क्या है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बनाओ और इसको फॉलो करने के लिए लोगों को बताओ। And to take account of financial reporting needs of emerging economies and small and medium-sized entities, bring out the convergence of national and international financial reporting standards. मतलब उनको एक बनाओ, harmonize कर almost bring it at the same page. USB का USB International accounting standards. ये लिखा हुआ है उसमें। पर ये सब बोर्ड्स और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसा बनाते हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्या क्या काम रहता है इनका? Develop a set of high quality, understandable, enforceable, and globally accepted financial reporting standards. Promote the use and rigorous application of these standards to take account of the financial reporting needs of emerging economies and small and medium-sized entities. Bring about the convergence of national and international financial reporting standards. IASB क्या है? Standard setting body of the IFRS Foundation. Its members are responsible for the development and application of IFRS and interpretations. मतलब कि do you need these standards or not? Interpret करो. These all stuff is required by them. उसके बाद आता IFRS Interpretations Committee and IFRS Advisory Council. Reviews widespread accounting issues on a timely basis and provides authoritative guidance on the issues. कौन करता है ये? Interpretations Committee. और Advisory Council क्या करता? Formal advisory body to IASB and IFRS Foundation. It is comprised of wide range of members who are affected by IASB's work. This includes advising the IASB, informing the IASB, and giving advice to the IASB. When you become ACCA, you are also part of IASB. IFAC, International Federations of Accounting Council. You'll also be part of it. और आप लोग अगर कुछ अच्छी महारत हासिल करें, then you can also be part of IASB making all those rules regulations. और ऐसा नहीं कि रूल रेगुलेशन बन गए तो बस वही फॉलो करते रहना है, रेगुलर उसको अपडेट करना है। अब जैसे कि देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब हम बनाए थे, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था क्या? नहीं था, लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ चेंजेस करना चाहिए क्या? करना चाहिए, या एडिशन करना चाहिए, डिलीशन करना चाहिए। देयर शुड बी सम अपडेट हैपनिंग। नाउ द रोल ऑफ IASB, independent science setting body which is based in London. It has 14 members from 9 countries. Aims to develop a single set of high quality, understandable, enforceable accounting standards. That's what they're saying. अगर सपोज कभी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड करना है, तो उसके लिए people come up with an exposure draft or something like the need of an accounting standard, and then उसको पूरे members rigorously check करते हैं कि अच्छा ये स्टैंडर्ड की जरूरत है या नहीं है, and then they finally come up with an amendment or an addition to the IFRS.
Over 100 countries have adopted international standards or have attended the national standards to comply with international. Give 3 reasons why countries would want to do this. To get international acceptance, to gain more proper comparability, and to have growth in their organization. Simple. Pretty simple, right? लेकिन ये याद रख लो कि आप लोग घर जाकर when you go and make notes, right? How does it go? IFRS Foundation, IASB, IFRS IC Interpretation Committee. Then उसके बाद क्या था? IFRS Advisory Council AC. सबके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप लोग एक अच्छा शॉर्ट में लिख लेना उधर, क्योंकि और उनकी फुल फॉर्म भी IASB, IFRS, IFAC तो आप लोग को अभी याद नहीं आया, कल आया था शायद। तो ये सब आप लोग लिख कर रख लो ताकि कल के दिन ऐसे क्वेश्चंस आए। रूल्स IFRS फाउंडेशन बनाता स्टैंडर्ड्स या कौन बनाते स्टैंडर्ड्स, इन सबकी क्लैरिटी आपके पास रहना। Then regulation within the UK, matlab rules and regulations within the UK. 1 second, where is that? Accounting standards in the UK are written by Financial Reporting Council. The government has, however, announced that FRC is to be abolished and replaced with a new regulator, the Audit and Reporting Governance Authority. At the time the study text was printed, enacted details proposed, FRC plays crucial roles as regulator in the oversight and development of corporate governance standards in the UK, such as the UK Corporate Governance Code and standards for the accounting industry. The regulator is supported by various committees which advise them on matters related to code, standard settings, strategic issues, matters relating to conduct activities to promote high quality corporate reporting. These include monitoring, oversight, investigating, disciplinary functions. मतलब ओवरऑल एक स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन के एटमॉस्फेयर को डेवलप किया जाता है ताकि आपकी अकाउंटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। Is that clear? We've also come towards the end of this chapter, but we are not ending right now. Yeah, this is the end of this chapter. Chapter 12 is done. There are still some textual understandings remaining. All these textual understandings which I am leaving, जैसे कि ये देखो यहाँ पे which of the following develops, publishes IFRS and interpretations? बहरहाल आपको आंसर करना है अभी। I'm not here to do that for, क्योंकि ये टेस्टिंग your understanding है, नहीं। Okay. Easy. Now, chapter 13, accounting and finance function within businesses. अब तक क्या कर रहे थे हम लोग for the past few days? अगर let's just go through chapter 1 to 12. What all did we do from chapter 1 to 12? We did what is a business organization. Then we talked about structures of business organization, then culture in business organization. Then we talked about information technology and information systems. Then stakeholder analysis we did. Then we went on to economics. 6, 7, 8 was economics. 9th we did what? Competitive factors. 10th we were talking about ethics. 11th we were talking about corporate governance. 12th we were talking about law. And from now on, accounting and finance functions within business and all this stuff. From now, chapter 13 to chapter 25, it is completely going to be logical. इसके पूरे explanations logical होने वाले, जैसे कि rules regulations follow करना and stuff. यहाँ पे थोड़ा कम रहेंगे, ज़्यादा logics रहेंगे. There will be some accounting rules which they are going to talk about. After that, पूरे logics ही रहेंगे. Now just see this. This is basic accounting, which is in financial accounting starting. What is accounting? Accounting क्यों कर रहे हैं हम? Systematic recording, reporting and analysis of financial transactions within a business. In larger organizations, range of tasks that the accounting function needs to perform is very wide. This often means that the accounts department is split into a number of different functions
each of which deals with a separate set of responsibilities, just like this. Can you make a note of this really important stuff? Finance director, क्या काम रहता finance director का? Debt equity structure, financial measurement of commercial success, resource allocation. Then there is chief accountant under that, treasurer, tax manager, management accountant. सबके responsibilities क्या होते हैं? Can you just make a note of it? Taste this in 1 minute. खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं। Responsibility is on you. हाँ, जिस जितना एक सके उतना। We can talk about all these stuff in this session.
Okay, done writing. Let's move forward. So basically, क्यों करते हैं हम लोग? Okay, why do we have this financial accounting function and what's done in financial accounting? When we talk about books of prime entry, there are 5 main books: purchase day book, sales day book, cash book, petty cash book, and the journal. Basically, these are subsidiary books. Anyone from non-commerce background? No one. So I don't need to explain all these stuff. Then at the end of the accounting year, उसको आगे बना जाकर आप statement of profit and loss, statement of financial position, which is nothing but your balance sheet. उसके बाद cash flow statement. Now, cash flow statement is something new for you if you have not done it. This is dealing with only cash. मतलब कि कितना cash inflow हो रहा है, कितना cash outflow हो रहा है. That is related with the cash flow statement, which we are going to do it in financial accounting. उसके ऊपर अच्छे खासे problems भी है cash flows पे. This is something which is new for you. Maybe it's not taught in your 11th and 12th. Statement of cash flows. अब ये बताओ. Noah has been asked to find out 4 pieces of information about FGH Limited for his manager from the company's statement of profit or loss and statement of financial position. Profit or loss or balance sheet. He has been asked to find the ratio of current assets to the current liabilities. तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कहाँ पे मालूम करेंगे हम? बैलेंस शीट में. टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी कहाँ मालूम करेंगे हम? बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में? शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है? बैलेंस शीट में ना. फिर ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, प्रॉफिट एंड लॉस. टोटल रेंट पेड फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस. रेंट एक एक्सपेंस हुआ ना, तो एक्सपेंस कहाँ था? अगर रेंट पेएबल है तो लायबिलिटी होती है. रेंट पेड बोल रहा ना. कौन गाइस कितने आए कॉमर्स अकाउंटिंग में? कितने आए तुमको? तुमको आते कितने आए पूछ रहा हूँ मैं. 12th में 67 है. कुल क्यों नहीं आए? यहाँ तो कितने आए थे? 82. अकाउंट में कितने आए? 98. यहाँ मिल गया देखो अकाउंटिंग में 98. आलिया आपको कितने आए थे? 68. क्यों आए कम? शेयरी में. अकाउंट्स में नॉर्मली आपको कितने आते थे? सी में मतलब वही कितने आते थे नॉर्मल 70s में. अब से आप कितने? 99. आप बोलो टोटल रेंट पेड कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस. हाँ वही तो ना, रोज नहीं पढ़ते इस बात से भूल जाते. इस बार नहीं होना वैसे. अपना नाम भूल जा रहे, भूल जाओ. आई डोंट माइंड. मेरा नाम क्या था बोल दो तुम, लेकिन ये मत भूलो. देखो यहाँ पर ये कैसा आंसर होता है. SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नथिंग बट आर बैलेंस शीट. SOFP बैलेंस शीट. SOPL स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहले के दो क्या हो गए? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो द आंसर इज व्हाई डू बिजनेस नीड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्यों? ओनर्स को मालूम होना बिजनेस कैसा चल रहा, मैनेजर्स को मालूम होना कि व्हाट पेस वी आर गोइंग ऑन, बैंक्स को मालूम होना ताकि वो लोग लोन दे या नहीं दे, एम्प्लॉयज को मालूम होना बिकॉज दे वांट टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, suppliers and customers को मालूम होना ताकि so that they keep relation with the organization or not, and then the government so that they check on whether they are paying taxes on time or not. That's the reason accounting statements are to be prepared. Then talking about this thing which is called integrated reporting. Now what do you mean by integrated reporting? Anyone?
What do you mean by this integrated reporting? मैं आपको बताता हूँ. See, in accounting, what we do, we record all the stuff which are taken in accounts properly, which is properly measurable, which is properly, recordable. You will put it in accounting. But what about those stuff which are affecting business, but they are not measurable? तो क्या करते हैं आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के नीचे यू जस्ट क्रिएट अनदर रिपोर्ट यू जस्ट ट्राई टू अटैच इट दैट हाउ मच इज इट इन्फ्लुएंसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी या एथिक्स है या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स है व्हिच आर रेलेवेंट बट नॉट रिकॉर्डेड तो आप क्या करते हैं उसको रेलेवेंट बनाते हैं and that's what is written there major risk organization faces by any action they have taken to deal with these risks organization performance regarding ethics and CSR. This is also to be reported, right? इसको भी तो बताएंगे ना लेकिन प्रॉपर्ली मेजरेबल नहीं होता इसलिए नहीं बताते. ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली मेजरेबल नहीं होता ये इसलिए जो है तो रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में. बट डू यू नीड टू मेंशन दिस इन द रिपोर्ट? यस यू नीड टू मेंशन इट. तो क्या हो रहा है यहाँ पे यू आर इंटीग्रेटिंग नॉन फाइनेंस नॉन अकाउंटिंग स्टफ आल्सो इनटू accounting, not in the balance sheet of profit and loss account, but in below notes to accounts. I hope you guys are understanding this. And why we do that? So that we have a proper view of the organization. Okay. Like integrated reporting context, मतलब capital के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो just see this. It's just that understanding human capital here. Can you just read it? Rehan. With integrated reporting, instead What of say? having environmental and social issues are reported in a separate section of the annual report or a standalone sustainability report, the idea is that one report should capture the strategic and operational action of a management in its holistic approach to business and stakeholders' well-being. Holistic approach मतलब कि सब कुछ एक साथ आपको दिखता रहना. You can make a decision based on one stuff. Okay, अरे ये accounting देख लिए फिर अगली जगह जाकर जो है so how is their CSR going, how is this other stuff going on, तो सबके लिए अलग अलग देखने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पे सब कुछ आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा. Next, The management accounts must be able to collaborate with the top management in the integration of financial well-being in with community and stakeholders well-being. Integrated reporting will being strategy reporting closer to statutory reporting closely मतलब कि statutory reporting का मतलब वो रहता है that reporting which is required by the law. That is statutory reporting. Statute is telling us to do it. Statutory requirements है. इसका मतलब है that is lawful requirements. Okay, go ahead. management accounts and will make management accounts even more important in bringing the gap between stakeholders and the company's reports. The management accounts will be accepted to produce information that is a balance between quantitative and qualitative information, links past, present, and future performance, considers the regulatory impacts of performance, provides an analysis of factors that could impact in the future. There is clearly a need for the profession to accept the challenge for being the mechanism for a new type of transparency and accountability. One of the incorporate social and environment impacts as well being as economic ones. मतलब कि सब roles, whatever is happening across in the organization, not only just financially, but each and everything which is financial, non-financial, quality terms, quantitative terms, everything should be put into this report. It should be integrated in a manner that everything is available in one place. The same goes with sustainability, accounted, sustainability stuff which they have to be. That should also be properly accounted for. And then they also talk about the 6 types of capital. One is financial capital, which we all know, shares and the amount which is already invested. Then after that comes manufactured capital, which is the goods which you manufacture. Then comes intellectual capital. अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, that is also capital for you. Okay, same goes with human capital, social and relationship capital.
ये क्या किसके टर्मिनोलॉजी के अंदर आ रहा है? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर। नेचुरल कैपिटल, अगर आप सपोज इफ यू आर लोकेटेड समवेयर वेयर you don't even need a AC or a fan because वहाँ पे natural हवा चलते ही रहती, that's natural capital thing. It's not something which is coming free for you. You should recognize it as capital. Okay. It is just going a step further in understanding that. Now, what I'm going to do is I'm going to pause it here. See, again, it is International Integrated Reporting Council, which we just did it earlier. Integrated reporting, and then there is management accounting. Management accounting is the basics of management accounting, which we are doing right. So I'm stopping it till here. You guys can make a note of these capitals: manufactured capital, intellectual capital, human capital, social and relationship capital, natural capital, etc. And we'll pause our business and technology session up to you guys finishing this off. Then we can happily move towards management accounting. हाँ ये सही है।